So this is the first chapter of your class 11th, and it is also the part of your NEET syllabus. And the first chapter, it is the first chapter which has been mentioned in your syllabus of NEET. So let's get started with the chapter, and the chapter is the living world. So the first topic which is being given is the living organisms, right? So how will you define any organism living? So for defining any of organism living is that we see a few characteristic processes that a particular organism performs. What kind of processes I'm talking about? I'm talking about like a growth phase of body, right? Growth phase is also the initial important phase which defines your metabolism. After growth, we do also talk about reproduction, like digestion. These all are the processes which define any kind of organism living, right? All plants, animals and microorganisms are living organism of yours, right? Anything, the smallest creature available on the earth, on your planet, is living, right? Either it is a soil particle, even in your soil particles which is non microscopic, right? Microscopic soil particles are, so even they have the smallest microbes, and those microbes are also living. So about 90% of the organisms are living in the surrounding. So here is the characteristic of living organism. Like, you have to define the characteristic of organisms. So how would you define? So basically all organisms are made up of cells. Now cells are of two types, one cell and multiple cell. Like, you have known to these things. So one cell is also called as unicellular organisms, okay, and multicelled organism, the organism which has two or more cells, is known as multicellular organism. So this thing is basic part that I am mentioning you today. And the requirement of food also defines any organism living, right? If any organism is living, so definitely and perfectly it would be needing food for development and as well as for the release of energy, right? So for sake of development and for sake of energy requirement for performing any else processes and your work, the organism, if it is living, would be needed food. Like, they show growth, as told you. So growth phase is the initial phase and basic character for defining any organism living, right? Respiration is also the basic character of defining. Response to any stimuli. What is stimuli? It is something which is external source, which is externally somewhere giving response or giving touch to our body, and our body in return is responding to that stimuli. For example, if you go in a dusty area, the area which is full of dust and pollen grains, and you inhale the air there, right? So what happens there? You start sneezing. What is that? That is the stimuli response. स्टेमुलाई रिस्पॉन्स मीन्स स्टेमुलाई रिस्पॉन्स था कि जो डस्ट एंड पोलन पार्टिकल्स आपकी नोज़ में गए, तो दे स्टार्टेड इरिटेशन देयर, एंड दैट इरिटेशन वाज द स्टिमुलाई दैट वाज सेंट टू द सिग्नल टू योर ब्रेन्स, and there the brain started the process of sneezing. So that was the response to that irritation produced by dust particles and pollen grains. Excretion and reproduction, all these are the characters. We have talked about 6 to 7 characters that are defining any kind of organism living, right? So I wish कि आपको ये चीज़ clear हो गई होगी. Now let's talk some simple things also. Difference between living and non-living. What is that? Important? Yeah, that's very important because that would be helping you to make it more clear about the living things. So living things are made up of cells, right? They have the smallest structure called cell, and they have the basic difference between cells. And these non-living cells aren't made of cells. They aren't made of cells, right? They are made of some hard materials, which is a single cell, single material, right? It is not the cell. And they show, living things here show movement, right? They need energy. So in order to produce energy, they take food.
right? And your non-living things aren't showing any kind of movement without external force, right? And they aren't able to produce energy by themselves, so they can be working or showing movement by the external source. We know that living organisms need food because they produce energy, and same is that non-living organisms don't need any kind of food. Next difference is their growth is irreversible. Whose growth? Your living things. अगर लिविंग थिंग्स की ग्रोथ एक बार बढ़ गई है, दे हैव इंक्रीज देयर ग्रोथ, दे वॉन्ट बी इरिवर्सिबल. एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव द रिवर्स प्रोसेस, मीन्स कि उनकी ग्रोथ अगर हो चुकी है, सो वी कैन कट डाउन और वेरियस अदर आर्टिफिशियल प्रोसेसेस आर देयर दैट वुड बी रिड्यूसिंग देयर growth. Okay, respiration is also the process which oxidizes your food in order to release energy in living organisms, while non-living things don't need any kind of such process, so they don't respire. And reproduction is processed by living organisms, and non-living organism never reproduce. Okay, means अगर आप कोई structure लेते हो and you leave that two structures alone, they won't be reproducing a little structure there. Okay, अगर आप दो बॉल को लेते हो and you leave those two balls together, they won't be producing a small ball. Okay, so this is the example that I made it, but living organisms do reproduce. Okay, now initial thing between the difference between plant and animal, that is the important thing that should be clear in your mind. Okay, so first is that difference which is by plants. So plants prepare their own food by the process called photosynthesis, and the plants which are showing the process of photosynthesis are known as autotrophs. Okay, animals don't and never prepare their own food, so they are called heterotrophs. Okay, plants show movement but not locomotion, right? While animals show your movement and locomotion. Now the thing is here, difference between locomotion and movement. Movement is process that is development related, means in plants you see development of stem, development of leaf, development of flower, development of seed. This is your movement. Their branches go up in the different directions, right? They shade up in different directions, so that is the movement. And locomotion is movement of anything from one place to another. अगर कोई चीज़ चल कर कहीं जा रही है, so that is the called process locomotion. So that is the basic difference between movement and locomotion. Movement is invisible, means that cannot be seen, but there is some change in the object, while locomotion is change in the position of object, right? There is the difference between a single word, between the differentiation of two words. These are the important thing, right? So made it clear, animals show your movement as well as locomotion, while plants don't show locomotion but they show the movement. Okay, plants do show stimuli response, right? They show a stimuli response, they show response to any kind of external factor, but they don't have sense organs, right? And animals also show stimuli to the response, and they have sense organs also. And how the plants do show response to stimuli, right? Your question in your mind. So you must have heard about touch me not plant. Which plant I am talking about? Touch me not. So this plant, if you're touching its leaf, they would be shading down, right? In a green plant, even if you will be touching its leaf, they will be shading down. So what is the difference? This is the stimuli response called, कि अगर ह्यूमन टच कर रहा है लीफ को तो उसकी लीफ मुरझा जाती है, राइट? तो दैट इज द स्टिमुलाई रिस्पॉन्स शोन बाय प्लांट्स. सो आई गेस दीज थिंग्स आर बेसिक थिंग्स and they would be clear. If else you have any doubt, you may ask in the comment section. Coming up to next point, plants do show growth to
all the life phases, means throughout the life. While your animals don't have such property, they grow up to the certain age. Like in humans we usually say that girls and boys do grow up to the age of 20s and 21, right, for boys, and up to 17 16 to girls. So why? Because they are the certain definition aged in organisms, because we are multicellular organism. Plants are also multicellular, but they have some different types of hormones that are released and responsible for the growth. So I guess these things are clear to everybody. And now coming to another topic, that is your nomenclature. Now coming to next topic, that is your nomenclature. So basically nomenclature को अगर हम नॉर्मल टर्म में डिफाइन करें तो इसको हम नेमिंग कहते हैं, राइट. व्हाट डू वी से? नेमिंग. सो नेमिंग इज एक्चुअली क्या कि हम जैसे कि कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको एक नाम देते हैं, नेम करते हैं. सो जिससे कि वो जो और बच्चे हैं उसके साथ मिक्स ना हो, वी कैन सेपरेट आउट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. सो इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अराउंड 300 लाख ऑर्गेनिजम्स आर देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. दैट इज़ योर 30 मिलियन. तो 30 मिलियन में से किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमें अलग करने के लिए एक स्पेशल नाम देना होगा, राइट. तो उस नाम देने के प्रोसेस को ही हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं, राइट. सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है, देखो वहाँ पर आपको खुद ही डेफिनेशन दी हुई है. एंड व्हाट इज दैट डेफिनेशन? स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज योर व्हाट? नॉमेनक्लेचर. सो किसी एक नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं, राइट. नेक्स्ट थिंग व्हाट इज गिवन इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ प्री एग्जिस्टिंग टैक्सॉन एंड नेम टू एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जैसे हम लोग लुइस की बात करते हैं, राइट. जैसे हम बहुत सारे किंग्स के नाम सुनते हैं अमेरिका में और बहुत सारी जगहों पर लुइस. सो हम आगे देखते हैं कि जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती है तो लुइस सेकंड नाम रख दिया जाता है, लुइस थर्ड, लुइस फोर्थ. सो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर है. क्या है? कि एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर है, एक नाम दे दिया गया. और जब हम और बहुत सारी जो कैटेगरी, बहुत सारे इनके हम कह सकते हैं पार्ट्स होते हैं, उनको हम नाम करते हैं तो उसे हम टैक्सॉन कहते हैं. जैसे लुइस सेकंड हो गया, लुइस हमारा क्या है? नॉमेनक्लेचर है. और लुइस सेकंड ये जो है ये हम आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे. अगर हम किसी और दूसरे इंसान का नाम लुइस सेकंड रख देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा. लाइक होमोसेपियंस. सो ह्यूमन बींग्स को होमोसेपियंस बोलते हैं. अब इन होमोसेपियंस में हमारे बहुत सारे होमोसेपियंस आते हैं. होमोसेपियन 1 फॉर एग्जाम्पल, होमोसेपियन अफ्रीकन, होमोसेपियन इंडियन. सो इस तरीके से भी डिवीज़न किया जाता है जिससे कि हम किसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन का टर्म यूज़ करते हैं, राइट. प्री एग्जिस्टिंग चीज़ के साथ नया नाम जोड़ के किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना हमारा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है, राइट. एंड देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. अब ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या आ गया भैया? नॉमेनक्लेचर में हम दो नाम यूज़ करते हैं. पहला होता है जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट. अब इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमारा जो नॉमेनक्लेचर बनता है यानी नाम बनता है उसे हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ठीक है. लाइक आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो. एक आपने नाम लिखा नीतू सिंह. ठीक है. अब हम मान लेते हैं कि ये जो नीतू सिंह है भैया, ये हमारा नीतू क्या है? इनका जेनेरिक नेम है. ठीक है. और ये सिंह क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है. तो जब हमने इसको जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. तो हम ये कह सकते हैं जेनेरिक नेम हमारा फर्स्ट नेम होता है और स्पेसिफिक नेम हमारा लास्ट नेम होता है. ये तो हो गया एकदम क्लियर. अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का
फॉर्मूला या फिर मेथड आपको कोरोलिस लीनियस ने दिया था। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे हु वॉज ही एंड व्हाट वाज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू बायोलॉजी। ठीक है, नाउ वी हैव सम कॉमन थिंग्स दैट वी हैव टू बी अंडरलाइंड एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट while राइटिंग द nomenclature and what are those, like we have यूजुअली जो भी हम नेम लिखते हैं नॉमेनक्लेचर के टाइम वो लैटिन में लिखा जाता है। हाउ डू वी राइट लैटिन? इट इज समथिंग टिल्ट एंड डाउन, लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा टिल्ट लिखते हैं हम टुवर्ड्स द मार्जिन, राइट। और ये इटैलिक्स में होता है। इस प्रोसेस के बाद जो आपका आता है कि अगर ये टाइप्ड है, हम टाइप करके या फिर कॉपी राइट करके इसको लिख रहे हैं टाइपिंग के थ्रू, तो हम लैटिन और इटैलिक्स तो लिख सकते हैं, बट कॉमन अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि कॉमन नाम लिखेंगे। ठीक है, हम जैसे नॉर्मल लिखते हैं हमारी राइटिंग में वैसे ही नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं XYZ तो हमने ले लिया और 1 2, ठीक है, ये हमारा जेनरस नेम है और ये स्पेसिफिक नेम है। तो हम क्या करेंगे कि इस जेनरस नेम को और स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या है। नेक्स्ट जो हमें फॉर्मूला याद रखना है वो ये है कि आपका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। ठीक, हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होगा। और नेक्स्ट जो सारे के हैं वर्ड्स वो हमारे स्मॉल में ही लिखे जाएंगे। स्मॉल में लिखे जाना ही ज़रूरी होता है एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग to remember कि first letter of the name of nomenclature should always be capital and the rest of the word should be small in components. Now next thing, which is we have been talking about 2 institutions, right, which are responsible for these nomenclating process. Right, for your biotechnical, that is your plant related things, so we have international code for biotechnical nomenclature. ठीक है, बायोटेक्निकल यानी कि प्लांट रिलेटेड जो भी नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस होता है वो IUCN करता है, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बायोटेक्निकल नॉमेनक्लेचर। And for geological, that is your for animal nomenclature, we have another association, that is International Code of Geological Nomenclature, right? अब हम बातें हैं कि what are the main aim and function of these two. They are just responsible for having the approval assignment for any of the name. कोई भी जगह पर अगर नॉमेनक्लेचर किसी चीज़ का किया जा रहा है तो उसका अप्रूवल आपको कौन देगा? Either for plants it will be given by IUBN and for animals it would be given by IUZN. ठीक है, कोई भी प्लांट नया है, एनिमल नया है, तो उसका नॉमेनक्लेचर यही 2 हमारी एसोसिएशंस करती हैं।